वो याद ऐसी है ना कि वो मेमोरी ऐसी है कि वो भूल ही नहीं सकता ज़िंदगी। 940 क्वांटिटी आई। गुड। क्या 5 चीज़ों में लगाएंगे 50,000। क्या चाहिए? पैंट्स वही नहीं समझ आ रहा है किधर गए। What are you making? Guac and eggs, easy. Guac and eggs. पहले ये मिक्स करते हैं। स्पून से निकाल ले। स्पून से निकलता फिर में। अच्छा, you're doing this at a very gentle flame, so that it's a little runny when done. So how do you know when it's fully cooked? You leave it uncooked, like You leave it on with no flame. yeah, like because Let the residual heat cook it. two slices or one. Yummers. I think one should be enough because you have to work out. You know, the best thing about these eggs has to be that they're slightly runny. And that adds such a good flavor, you know. Let's taste the guac. See, I'm not a food connoisseur or anything. I don't care for much flavor, but I can tell why people would care so much about like a Bukhara dal and other kinds of dals. Yeah, but the guac is so good. You can taste every flavor very properly. आप आ रहे और एक बात बताना, हमने बैटरी चेंज अभी कब कराई थी? अभी जो है थोड़े 4-5 महीने हुए। अभी तो कराई थी चेंज। 4-5 महीने में एक बैटरी खत्म हो गई हमारी क्रूज की। खत्म नहीं, लेकिन वो उनकी गलती हम कैसे काटते हैं जब बैटरी चार्ज ही नहीं होगी। इस्तेमाल तो हो रही हो, लेकिन चार्ज यहाँ तो वहाँ तक कितनी चार्ज होगी बैटरी? आई ड्राइव इट टू द जिम एवरी डे। इससे ज्यादा मैं क्या चलाऊं यार गाड़ी? 10 दुनिया है जो अपने ऑफिस तक जाती है और ऑफिस से वापस आती है। नहीं, कम से कम 50 किलोमीटर थोड़ा 15 दिन में एक बार चल जाए ना तो फिर ठीक है। तो ले जा लिया करो अपने घर फिर महीने में एक बार। हाँ, तो कम से कम इतनी तो चली जाना, एक महीने में एक बार इतनी चल जाए तो बैटरी फुल चार्ज हो जाती है ना, उसकी वारंटी बढ़ जाती है। अब यहाँ से वहाँ तक 1-1.5 किलोमीटर में क्या चार्ज होगी बैटरी? तब तो कहीं क्या कर रहे हो उस गाड़ी का? ठीक है जी, बंद कर। बोलो। इट इज़ नाउ टाइम फॉर द जिम। एक पिन्नी खाई है और कॉफ़ी चल रही है साथ ही साथ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਰੂਟੀਨ। ਸੋਲਿਡ ਜੀ ਪਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੈਸਪ੍ਰੈਸੋ ਲਈ ਹੈ। ਇਟ ਪੁੱਟਸ ਯੂ ਇਨ ਅ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਯਾ, that's the plan now. Summer is officially upon us. It's 28 degrees and I'm really uncomfortable in this zipper. But I'll tell you something interesting. Back in college, we used to discuss benefits of marijuana versus alcohol, right? We were all drinking alcohol. And we would all get this news that some states have legalized marijuana and then Canada has done it for medicinal purposes. So naturally, makes you think. Then I would talk about it with my parents. Parents are damn chill, by the way. So we'd laugh about it that a person when drunk is likely to do so much. Like he might be involved in an accident, drunk driving. He might fight, all those sort of fights that break out after nightclubs and all of that. But a person on marijuana is likely to just chill, likely to just relax, not bother anyone. And extending that analogy, I've realized truly religious people, always realize it's an inward journey, right? You have to go within and find out the divine within you, and it's more self-exploratory. The truly irreligious people are the ones bothering everyone else. Everyone, they've got a problem. Eh na karo, oh na karo. Eh dukaan da naam change kar lo, oh kar lo. The truly religious person is just not bothered. You'd see him walking in a state of meditation. You'd see him working in a state of meditation. You'd see him making love in a state of meditation. But the truly irreligious person, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੈ. If it's not his way, then it's really something he can't sit well with. And that just tells you, man, the more you go down the path of irreligiosity, I don't know if that's even a word, but you get the point. You are likely to start conforming because the crowd expects conformity.
But to be yourself, truly yourself in a society that expects conformity more and more, is an act of rebellion. And therefore, I urge you, my dearest audience, to be yourself truly, to not bother others, to live your path and evolve and then figure out life for yourself. But honestly, people who bother others, it's not cool at all. Stuff like that. Anyway, that was my rant before we go lift. And now we shall not conform to what society wants. Because that'll be most convenient. और ninth को आ गए. Meditate next to the swimming pool. Seeing if they are joining. Joining as Team Sick Investor at gmail.com, baby. Hey, Karen, good afternoon. Good Thank you so afternoon. much for joining the call. I think you're on mute, but yeah. Okay. I'm very handicapped with meat, but yeah, awesome. Okay, great. Okay, so we'll just get right to the point. So I think this could be very wholesome, truly. Okay, got it. Okay, so we have no issues. It will be authentic conversation, but Karen, it will all be around the experience. आप भी कुछ कर लो फिर मेरा भतीजा Teddy Barinder, you want a piece of bread, Teddy Barinder? Papa, you want to share something अपने बचपन का? कोई यादें, कोई अच्छी याद अपने बचपन की, जो अच्छे मोमेंट्स थे, जेड़े याद आंदे होण थानू? ऐसा है कि वो दिन सबसे ज़्यादा याद आता है। अच्छा मोमेंट तो नहीं उसे कहेंगे, लेकिन मतलब अपनी कि जब स्कूल पढ़ता था तो शायद मैं 3rd में हूँगा। 3rd की बात याद है? हाँ, वो याद ऐसी है ना कि वो मेमोरी ऐसी है कि वो भूल ही नहीं सकता ज़िंदगी। तो ऐसा हुआ, स्कूल में एक ग्रुपिंग फ़ोटो हुई, तो वो ग्रुपिंग फ़ोटो मात्र उस टाइम पे 2 रुपए की थी। तो हमने नाम लिखा 2 रुपए देने के लिए। जब घर आया तो माँ से कहा 2 रुपए दे दो फ़ोटो का नाम। माँ ने कहा पैसे नहीं है। मैंने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ ने बहुत पीटा। तो जब इंटरवल ख़त्म हो गया तो घर के आगे से टीचर जा रही थी। उसने कहा अंदर रोने की आवाज़ क्यों है? वो घर के अंदर आ गई, क्योंकि स्कूल सामने था। घर के अंदर आई तो उसने पूछा क्या बात हो गई? तो कह रही है 2 रुपए के बिना स्कूल जाने को तैयार नहीं और मेरे पास 2 रुपये है नहीं, मैं इसलिए इसे मार रही हूँ। उसने कहा चलो, उसने मेरा हाथ पकड़ा और स्कूल ले गई। कहने लगी 2 रुपये मैं दूंगी इसके और इसको मिल जाएगी। तो वो दिन आज तक नहीं भूलता। वो भी वक्त, हाँ, कई मेमोरीज विविड होती है जो रह जाती है बच्चे के साथ। वो वक्त भी याद आता है। इम्प्रिंट रह एक वक्त वो भी आता है कि 1500 रुपये का इंजीनियरिंग का खर्चा था पर मंथ का, और घर में 500 रुपये में रोटी खाते थे, तो पढ़ाई छोड़ के आ गया था घर वापस। तो सब ये चीज़ें याद रहती हैं। Thank you so much. Hope you all enjoyed that. See you tomorrow.